Hi and welcome back to my channel Grow with Dilip. This video will cover the FMCG sector, which was the top gainer today or Friday. Today's Friday, so uh, let's see how that sector is doing. I think sector is doing well because people are expecting markets to go down further, or FMCG is one of the defensive sectors along with IT. तो IT में buying आ रही है and FMCG में buying आ रही है because normally FMCG products की spending कम नहीं होती है, right? We will spend there even if we have less money. So let's see that sector. तो जैसे मैं बता रहा था, FMCG is the top gainer today and IT is second. 24 January आज but the top 5 stocks in the sector are Lever, ITC, Nestle, Varun Beverages and Britannia. So let's start with Britannia. So Britannia below the 200-day, just crossed the 50-day. It's up 20% from the highs, बट रिज़ल्ट्स अगर हम देखें तो सितंबर जो लास्ट क्वार्टर था उसके रिज़ल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं थे, और पी भी काफ़ी हाई है और आगे की ग्रोथ भी इतनी एक्सपेक्टेड नहीं है. सो टेक्निकली नॉट स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है टू बाय इट. इफ़ यू गो फॉर द अदर्स एज वेल, विच इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर. लीवर भी ऊपर से 20% डाउन, ये तो 50 के भी नीचे है. और अगर हम इसका रिज़ल्ट भी देखें तो इतना ख़ास नहीं था और पी काफ़ी हाई है. तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम दिस स्टॉक एज वेल. ITC comparatively better than Lever and Britannia in terms of technicals, near the 50 and 200 day and just 10-11% from the highs. बट इसका भी अगर हम लास्ट रिज़ल्ट देखें तो सेल्स बड़ा था बट प्रॉफिट्स इतने बड़े नहीं थे, और पी ठीक है 27 है, बट कंपेयर टू व्हाट इट्स ग्रोइंग आई डोंट थिंक वी वुड बी विलिंग टू पे दिस मच. इसका भी होटल्स का डीमर्जर हुआ था, सो दैट इज़ अ डिफरेंट प्ले विच हैज़ हैपेंड, बट आई डोंट थिंक इट्स वैल्यूबल एट दीज लेवल्स. HUL, ITC और Nestle or Varun Beverages are the others. Nestle भी I don't think the results were that good. Technically भी stock below the 50 और around the 50 day, 200 से काफ़ी नीचे है, टॉप से भी 20% करेक्ट हो चुका है, और फ्लैट ग्रोथ था लास्ट क्वार्टर में भी, और पी रेशियो भी 50 के ऊपर, सो wouldn't want to buy them. Varun Beverages I think is one of the better ones, but टेक्निकली ऊपर से 20% गिर चुका है ये भी. और ऑल्दो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा था लास्ट क्वार्टर में, बट उसका पी काफ़ी हाई है, राइट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिचली वैल्यूड पीस अमंग द टॉप 5 FMCG कंपनीज. सो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है ग्रोथ, ऑल्दो के 2024 एक्सपेक्टेड, ये गलत दिखा रहा है, 2024 का 27% है. So still price is already too high, so I wouldn't invest at these levels in Varun Beverages as well. So nothing as such in the FMCG sector for me, but if you want to have a play, I think FMCG Bs would be available similar to ITBs. Better way to play it through that, which would be less volatile in case the markets take a downturn, which I'm expecting to happen next week or a little after that probably. So let's see how that pans out. So these are top 5 that I've done. Maybe you can do it for the remaining 8 odd stocks that are there, but I don't think any one of them would be a good buy even at these levels. So I would stay away from them. Probably buy some ITBs and FMCGBs if I want to, or if I want to be a little more riskier, I would buy Wipro, which is near the highs and comparatively looks better to me than the others. So आज के लिए इतना ही. I'll see you guys in the next one. If you like the content, do subscribe to the channel and forward it to your network. If you would like me to cover any topics, do put them in the comments below and let me know what should be the next video. I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye.